Hello, a very good evening to all. Just wait for 2-3 minutes, okay? Some other students are also joining. Then we are going to start the class. Okay? Just wait for 2-3 minutes. So, hello, a very good evening to all, and welcome to the class. So, chalo. So, in today class, we are going to revise our solution chapter, right? So, we already did some questions on इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हमने कुछ क्वेश्चंस केमिकल काइनेटिक्स पे भी कर लिए। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस बेटा सॉल्यूशंस पे करने वाले हैं, ठीक है? लाइक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हेनरीज लॉ, रॉल्स लॉ। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दीज चैप्टर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट, क्या क्या चीजें होती हैं क्या क्या नहीं, और समझते हैं एक बार। ओके, सो पहले क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे बता सकते हैं? KH values for some gases at a same temperature T are given, where KH is called the Henry constant. Now, what is the order of solubility in water? Order of solubility क्या होगा? वेणुगोपाल ने बोला है ऑप्शन बी। ओके, एनीवन एल्स? ऑप्शन ए। ओके, विदाश्री, तानुष, ऑप्शन ए। ओके, now let's see the concept here. So, what is the concept behind this question? So, the basic concept behind this question is, और किसने बोला? JNB Vatalan, okay, A, Renuka A, okay. So, the basic concept behind this question is, we know as KH value increases, solubility decreases. Huh? So, as the KH value increases, जैसे जैसे ये KH का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा. So, as the KH value increases, the solubility start decreasing. Solubility क्या होगा? डिक्रीज होने लग जाएगा. तो एक तो चीज हम लोगों को ये याद रखनी है सबको, KH बढ़ेगा, solubility घटेगा.
डन। ओके। सो ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू, के एच का वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए है? दैट इज आर्गन के लिए। इट मींस आर्गन का सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगा। देन के एच के वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए है? दैट इज CO2 के लिए। सो देन कम CO2। देन किसके लिए है? सो CH4 के लिए। तो देन कम CH4, and last we have formaldehyde. So this is the correct order of solubility. यानी मैक्सिमम सॉल्युबल हम फॉर्मेल्डिहाइड, और जो मिनिमम सॉल्युबल होगा वो आर्गन होगा। सो आर्गन मिनिमम सॉल्युबल होगा, और मैक्सिमम सॉल्युबल कौन होगा? फॉर्मेल्डी। डन। सो ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट? दैट इज बी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट बेटा, नॉट ए। तो जिन बच्चों ने भी ए बोला है वो गलत है। ठीक है। ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? जितना केएच ज्यादा, सॉल्युबिलिटी उतनी कम। तो केएच सबसे ज्यादा किसका है? आर्गन का। तो उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी, और सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी HCHO की। गॉट इट एवरीवन? तो ज्यादातर बच्चों ने ये बोला था ए इज रॉन्ग। क्या होगा? बी। बी इज द करेक्ट आंसर। यस एवरीवन, जस्ट रिप्लाई। इज दिस क्लियर? सबको समझ आया? गुड। चलो, नाउ रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो बस। क्या है ये? जस्ट रीड वन। The freezing point depression constant Kf of benzene. This is Kf beta. So Kf of benzene is given 5.12. The freezing point depression for the solution of molality 0.078 molar containing non-electrolyte solution in benzene is round off to two decimal places. So you have to calculate the freezing point depression. मतलब आपको डेल्टा TF निकालना है। ओके। We know the formula Kf into molality into I. So here I is equal to 1 because this is non-electrolyte. So I is equal to 1. Molality is given, Kf is given. Just calculate delta Tf. Everyone, start calculating. Start finding the value for our. Yes, option B. Okay. What about others? Option B is correct. Everyone? Yes, option B. रेणुका। ओके, ऑप्शन बी। चलो। हो गया। देखो, चेक करो।
फटाफट। कैसे आया? सो हेयर KF इज गिवन 5.12, molality is given 0.078, I is nothing but 1. So when we multiply this 5.12, right? So we need to multiply 5.12 with 0.078. You'll get 39.96 almost, right? 5.12 into 0.078. So you'll get 0.40 Kelvin approx. So which option is correct? B. So B is absolutely correct option. Now tell me, the mixture which show positive deviation from the Raoult's law. कौन सा mixture positive deviation show करेगा Raoult's law? D. Ethanol plus acetone. Okay, what about others? क्या आ रहा है? D. Verma and Venugopal, they're saying D. Okay. Nirali, Sir B. Okay, Yes, sir. great. B. Okay. So why B? B actually, I'm asking positive deviation. Option D. Yes, Tanush, good. Option D. D, D, D. Not B. Acetone and chloroform show negative deviation, बेटा. ये तो नेगेटिव शो करता है. Benzene and toluene show ideal. They are the example of ideal solution. Chloroethane and bromoethane, they are also example of ideal solution. Ethanol and acetone, क्या होगा? So ये जो इथेनॉल और एसीटोन हो, they will show positive deviation. तो ये सही होगा. ठीक है, यानी ऑप्शन डी जो है वो सही होगा कि इथेनॉल और एसीटोन पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे. सो अगर मैं बात करूं द मिक्सचर विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ, तो क्या बोलोगे? इथेनॉल एंड एसीटोन. बेंजीन टोलिन शो आइडियल, एसीटोन क्लोरोफॉर्म शो नेगेटिव, क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन शो आइडियल, and as ethanol and acetone show positive. So these things you need to remember. Done? चलो ये बताओ, for ideal solution, what is the correct option? For ideal solution, the correct option is Option A. yes. Which option? A. Beta, always remember, for either we talk about ideal and here we have non-ideal. So for ideal solution,
delta H of mixing is equal to 0. Delta V of mixing is equal to 0. In non-ideal, delta H of mixing greater than 0 for positive deviation, delta H of mixing less than 0 for negative deviation, delta V of mixing greater than 0. ठीक है, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 फॉर पॉजिटिव एंड डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग less than 0 for negative. So this is how we can remember the ideal and non-ideal solution. Okay. So they are asking for ideal solution. So for ideal solution, the correct option is A. Right? A हमारा correct option हो जाएगा. Done? Done everyone? Sure. Now, tell me which will form the maximum boiling azeotrophs. So we know what are azeotrophs. Azeotrophs are the binding mixtures having same composition in both vapor and liquid phase, and they boil at a constant temperature just like a pure liquid. Now, okay. So if we talk about the azeotrophs types, so we have a two types of azeotroph: maximum boiling azeotrophs and minimum boiling azeotrophs. So what are the maximum boiling azeotrophs? So maximum boiling azeotrophs मतलब क्या होगा बेटा? B. Okay. So maximum boiling azeotrophs which show large negative deviation from the Raoult's law. तो जो negative deviation show करेंगे Raoult's law से उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कि ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप है. और उसी तरीके से जो पॉजिटिव डिविएशन शो करेंगे दैट इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स. तो मैक्सिमम के अंदर आपको नेगेटिव का एग्जांपल ढूंढना है बस. तो मुझे बताओ नेगेटिव का एग्जांपल इसमें कौन सा होगा? एवरीवन, जो भी नेगेटिव डेविएशन शो करेगा वही मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स बनाएगा. वेणुगोपाल डी. ओके. रेणुका डी. ओके. डी डी. और कौन बोल रहा है डी? और कोई नहीं? रेस्ट ऑल. क्या होना चाहिए? आउट ऑफ दिस यू जस्ट आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन. क्या होगा? डन. गुड. So water and nitric acid, always remember, HNO3 and water, due to hydrogen bonding, they show maximum boiling azeotrophs. जबकि heptane and octane, example of ideal, this is the example of positive and positive, right? So these two positive, heptane, octane, ideal, and water plus nitric acid will show which type of deviation? Water plus nitric acid. So it will show
नेगेटिव डेविएशन। डन। चलो, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if molality of dilute solution is double, the value of molar depression constant kf will be। कह रहा है कि मुझे बताओ, अगर मोलालिटी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मैं डबल कर दूं, तो वैल्यू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ पे क्या फर्क पड़ेगा? बताओ। इफ द मोलालिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन को डबल कर दूं, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहा हूं, तो क्या फर्क पड़ेगा? सर, हाउ टू आइडेंटिफाई द नेगेटिव डेविएशन? बेटा, जिसमें भी ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग या किसी तरीके का भी फोर्स होगा, दे आर द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन। जहां पे बॉन्ड मजबूत हो रहा है, मतलब वहां पे वेपर कम बनेगा। सो ये होगा आपका नेगेटिव डेविएशन। इसका बोलो भाई क्या होगा? इफ द मोलैलिटी ऑफ द dilute solution is double, then the value of molar depression constant kf will be। kf का वैल्यू क्या होगा फिर? C, yes, unchanged. How we'll know? Because we know that ki the value of kf and kb, right? The value of kf and kb, kf and kb, molar depression constant and molar elevation constant. So these value are independent of the molality, concentration, right? So these depends only on the nature of the solvent। तो ये सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, बाकी सबके इंडिपेंडेंट होता है, बाकी सब पे डिपेंड नहीं करता है। सो वही क्वेश्चन था कि if the molality of the dilute solution is double, then the value of the molar depression constant kf will be। तो kf का वैल्यू क्या होगा? सो kf का वैल्यू क्या होगा बेटा? अनचेंज्ड, उस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? चलो, now you have to calculate the Ventov factor for the dilute aqueous solution of strong barium hydroxide. So write the formula of barium hydroxide and then calculate Ventov factor। Everyone, start calculating for barium hydroxide। D, okay, रेणुका ने D बोला। What is the formula of magnesium hydroxide? Sorry, barium hydroxide। BaOH whole twice। Very good, beta, very good। No, BaOH नहीं, BaOH whole twice। Good। So Ventov factor is 3। So we have one Ba and two OH negative। So we can say that Ventov factor is 3। We assume that they are strong electrolyte and completely dissociate। Now tell me beta, what happened
इफ इन प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करूं, इफ आई से कैलकुलेट फाइंड वेंट ऑफ फैक्टर, फाइंड आई, ओके, इफ 70% Na2SO4 डिसोसिएट। बेटा इसके लिए कितना होगा वेंट ऑफ फैक्टर? मैंने फॉर्मूला बताया था, आई इज इक्वल टू 1 + n-1 इंटू एल्फा। एल्फा इज 70%, मतलब 0.70। सो कैलकुलेट आई कितना आएगा इसके लिए? फाइंड वैल्यू। 12/5. 2.4 रेणुका, ओके। हाउ? So for Na2SO4, what is the value of n? N is equal to 3? No. I 1 plus 3 minus 1 into alpha. So this is 1 plus 2 into alpha is 0.7. So that is 1.1, 1.4. That comes out to be 2.4. Correct, beta. Very good. So किसने निकाला था 2.4? Renuka. Good, beta. Very good. So 2.4 is the correct answer. Got it, everyone? 12/5. Sorry, 12/5. 2.4 na beta. How 1.5? 2.4. How to calculate N? Okay. Beta, here we have Na2SO4. Okay. So how will it dissociate? It will dissociate to give two ions of Na plus and one ion of SO4 plus negative. So we can say that I is equal to 2 plus 1, that is 3. Got it? Okay. Now, which one of the following is incorrect for ideal solution?
Yes, everyone, tell. It's a very easy question. D, delta G of mix 0. Very good, beta. So, for ideal solution, we know delta G of mix is equal to 0 and delta S of mix is greater than 0 and this is less than 0. Okay, always remember कि गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब नेगेटिव होता है आइडियल के लिए। एंड जो डेल्टा एस होता है ना वो ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव होता है आइडियल के लिए। तो यहाँ तो उल्टा है, समझे? सो दिस इज द इनकरेक्ट, 0 नहीं होगा। गुड, मूव टू नेक्स्ट। At 100 degree, the vapor pressure of solution of 6.5 gram solid in 100 gram water is this. Kb is this. Then what is the boiling point of solution? Boiling point of solution क्या होगा? C. Okay. What about others? C. How will you calculate, beta? So we need to calculate delta TB. And for this we need Kb into M. So we know Kb, but we don't know M. What is M? Okay. So mass of the solid, we don't know. Then how will you calculate the molality? So this delta TB is nothing but mass of the solid upon molar mass into 1000 upon mass of the solvent. So mass of the solvent is given. Molar mass is also not given. Then how will you identify? So we know the formula, that is P naught minus PS upon P naught is equal to mole fraction of solute. So P naught is the pure vapor pressure of water, which is 760 minus 732 divided by 760. This is mass of solute, mole of solute. So 6.5 gram upon molar mass into 100 gram into 18 for water. ठीक है, चलो। So 60 में से 30 गया, that is 30, 28. So that comes out to be 28 upon 760 is equal to 6.5 into 18 upon 100 into M. So M comes out to be 6.5 into 18 into 760 divided by 28, or we say 280. 0 0 get cancelled. ठीक है, कितना आ गया कैलकुलेट करो। सो 65 इंटू 18 इंटू 76 डिवाइडेड बाई 28। सो ये आ गया वैल्यू आपका, देखो क्या क्या है, 6.5 और कहाँ गया ये, मोलिकुलर मास 100, 18 and that will be 28, right? So 28 m इधर गया, 6.5 इधर रहा, 18 इधर रहा, ये रहा, 28 नीचे आया, 760 ऊपर गया। तो कितना आ गया बोलो? दैट इज 65 into 18 into 76 and this divided by 28.
बाकी सबका कितना आया था एक बार बताओ, कंफर्म करोगे एवरीवन? फास्ट। कितना कितना आया था सबका? देखो, या सी, गुड। सो बस इतने पार्ट को ही सॉल्व करना था ना, एक बार देख लो कैसे हुआ है सॉल्व ये। दैट इज 28 अपॉन 760, एंड दिस विल इक्वल टू एन अपॉन एन। कितना आया था ये? तो ये दोनों एन अपॉन एन कितना आ गया था भाई? द वन फर्स्ट वैल्यू इज 6.5 ग्राम। सो 6.5 ग्राम अपॉन इसका मोलर मास हमें निकालना है। डिवाइड में, डिवाइड में क्या था? एन, मास ऑफ द सॉल्वेंट, जो कि 100 था। और ये कितना होता है बेटा? 18। इसका एक जीरो और लगा दो। ठीक है, तो ये हो गया। नो, अब देखो दिमाग लगाओ, एम मुझे निकालना है। सो एम निकालना है तो कितना आ जाएगा एम उधर जाके? दैट इज 65 अपॉन 28 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 1000। और ये गया 760। ठीक है, 760। अब देखो, जीरो से जीरो गेट कैंसिल्ड। हम्म और क्या बचा? कैलकुलेट कर लो। तो हमारे पास बचा 65 इंटू 18 इंटू 76 and divided by 28 and divided by 100. So 31.75, almost 32. So मोलर मास कितना आ गया? 32। अब हम निकाल सकते हैं डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास इंटू 1000 upon mass of solvent. So from here you will calculate delta TB. कितना आएगा डेल्टा टीबी? करो कैलकुलेट। So it comes out to be, it comes out to be 100 and 100 get cancelled now. So 10, 1.05। कितना आया? 1.05 डिग्री सेल्सियस। अब we know delta TB is what? TB minus TB naught. So this TB is equal to delta TB plus TB naught. So delta TB is 1.05 and this TB naught is 100. So answer is 101.5. Good. So option C is absolutely correct. Everyone. Good. So option C हमारा correct है. Now, which of the following electrolyte has the same value of Ventov factor as that of this? जितना Ventov factor इसका है, उतना ही Ventov factor इनमें से और किसका है? जल्दी निकालो, फटाफट, fast. Everyone need to calculate the value. Yes. 5 इसका कितना है? 2 डी। एल्यूमिनियम 5। सो 5 किसका आ रहा है बेटा? डी डी सर। नो, डी। डी नहीं बेटा, डी का तो हो जाएगा 3K, 3K प्लस FeCN6। सो दिस विल बी 3 प्लस 1, दैट इज 4। दिस वन ना, बी 4K। हम्म 5। So this is how we can find. Got it, everyone? यस Good. So this is how we can solve such kind of questions. Okay.
डन। सो दैट्स ऑल। राइट। सो यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुमसे। ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग 0.10 मोलर, सबका मोलैलिटी ये है, लार्जेस्ट फिजिंग पॉइंट कौन शो करेगा? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम इंटू आई। सो यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट आई। किसके लिए आई का वैल्यू ज्यादा आ रहा है? फॉर विच वैल्यू इज मोर? के एफ का वैल्यू किसके लिए ज्यादा आएगा? दिस इज फॉर टू। ये कोवलेंट है तो 1, 5, 3। सो ऑप्शन नंबर सी। गुड। किरण बी नहीं, सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो, सो एवरीवन गॉट इट? समझ आया सबको? ओके। सो विल मीट इन नेक्स्ट क्लास एंड फिर हम आगे वहां पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है? सो जब तक आप लोग इसको अच्छे से जस्ट गो थ्रू करो, रिवाइज करो एंड ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन। सो हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर्स कर लिए हैं, तो इन तीनों चैप्टर्स पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस करने का देखो, ठीक है? एक बार क्वेश्चंस कर लोगे तो इजिली सॉल्व हो जाएंगे सारे। राइट। थैंक यू ऑल।